A very good morning to all the students of class 2nd. Dear student, today we will study the next chapter of social science, that is chapter 14, named as Nature of Animals. So, dear student, let's discuss with the chapter Nature of Animals. Very first, dear student, you should know the learning objectives of the chapters. So, you will learn about nature of animals in this chapter. Let's discuss it. So, dear student, बच्चों, animals move भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं और grow भी करते हैं. वो उनका एक nature है. Because animals are also living thing. जैसे हम सांस लेते हैं, चीजों को feel करते हैं, खाना खाते हैं, ग्रो करते हैं, वैसे ही एनिमल भी ये सारी क्रियाएं करते हैं. द फर्स्ट वन इज एनिमल्स मूव. एनिमल्स कैसे चलते हैं? बिग एनिमल्स वॉक ऑन देयर फीट. जो बड़े जानवर होते हैं बच्चों, आई एम हाईलाइटिंग इट. बिग एनिमल्स वॉक ऑन देयर फीट. जो बड़े जानवर होते हैं वो अपने पैरों पे चलते हैं. Birds and some insects fly in the air with their wings. और चिड़ियाएं और कीट जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने विंग से, अपने पंखों से क्या होता है बच्चों, उड़ते हैं. So I am highlighting it. This is very important. Who walk on their feet? So the answer is big animals walk on their feet. Who fly in the air with their wings? So the answer is birds and some insects fly in the air with their wings. Who can fly in the air with their wings? Birds and insects can fly in the air with their wings. The next one is fish swim in the water with their fins. वाटर में कौन रहता है? वाटर में मछलियां रहती हैं जो अपनी पंखों से, जो अपने फिन से तैरती हैं. Fish swim in the water with their fins. Snake and snail crawl. Snake और snail क्या करते हैं? रेंगते हैं, crawl करते हैं. So again this is very important question that you should know. Which animals crawl? कौन से जानवर crawl करते हैं? तो snakes and snails crawls. Snakes और snail क्या करते हैं? रेंगते हैं. Dear student, this is the pictorial part of animals. This is snail, this is snake, this is fish, and this is bird. This is rabbit. So the big animals walk on their feet. Birds and insects can fly with their wings. Who lives in the water? Fish swims in the water. Who crawls? Snakes and snails crawl. The next one is animals feed and react. Animals feed and react. Let's discuss it. Animals have 2 to 5 sense of organs. बच्चों, एनिमल्स के पास सेंस होते हैं, 2 से 5 सेंस होते हैं जिन्हें वो फील कर सकते हैं. They use their sense organs to sense danger or to search food. वो अपने सेंस का यूज कहाँ पर करते हैं बच्चों? वो अपने सेंस से किसी भी खतरे को जज करते हैं और अपना खाना ढूंढते हैं.
So what is the use of sense organs in animals? They use their sense organs to sense danger or to search food. Animals can openly show their feelings of joy and pain. Their reaction is love, fight or flight. एनिमल्स बच्चों अपना दुख अपनी खुशियां भी शेयर करते हैं और उनका रिएक्शन क्या रहता है? देयर रिएक्शन इज लव, फाइट और फ्लाइट. द नेक्स्ट one is animals breathe. Dear student, animals breathe in fresh air. Animals कहाँ सांस लेते हैं? फ्रेश एयर में सांस लेते हैं. Many animals breathe through their nose and lungs. बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो किसके थ्रू सांस लेते हैं? नाक के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू. लेट्स डिस्कस इट. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश के थ्रू सांस लेते हैं? गिल्स के थ्रू. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू tiny holes on their body. Fish breathe through gills. So again, this is very important question. Who breathe through gills? So the answer is fish breathe through gills. Insects breathe through tiny holes on their body. Insects कैसे breathe करते हैं? जो उनके body में छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे वो सांस लेते हैं. So again, this is a very important question. Who breathe through tiny holes on their body? So the answer is insects breathe through tiny holes on their body. The next one is animals take food and water. So this is very important that you should know from where animal takes food and water. So let's discuss it. Animals cannot prepare their own food like plants. Plants की तरह animal अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. जैसा हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि plants अपना खाना खुद बनाते हैं. तो बच्चों एनिमल्स ऐसे नहीं करते. दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स. तो एनिमल्स या तो प्लांट खाते हैं या फिर किसी और जानवर को खाते हैं. दे ऑल्सो नीड वाटर टू स्टे अलाइव. उन्हें भी जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है. बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग. सो दे ऑल्सो नीड वाटर टू स्टे अलाइव. See in the pictorial part, cow eating grass, elephant eating sugarcane. And in this picture, plants make their food. How? In the presence of sunlight, carbon dioxide and water mix and make sugar. The next one is animal reproduce. So let's discuss it. Animals reproduce. Animals produce their own kind. Some female animals like cat give birth to babies. Women also give birth to their babies. They feed their babies. Some animals like birds and frogs reproduce by laying eggs. तो बच्चों जैसे एक माता के एक नारी के बच्चे होते हैं वैसे ही बिल्ली के भी बच्चे होते हैं. फीमेल बिल्ली के भी बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चे को क्या करती है? फीड करती है. वैसे ही चिड़िया और मेंढक जो होते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं? एग से. वो क्या करते हैं? एग देते हैं, अंडे देते हैं और उनसे उनके बच्चे निकलते हैं. So again this is very important. So I am highlighting it. Some animals like frog reproduce by laying eggs. So this is very important that you should know. The next one is animals grow. How animals grow? Animals grow by eating. A baby grows into a man. A chick grows into a hen.
A kitten grows into a cat. A caterpillar grows into a butterfly. तो बच्चों कैसे कैसे ग्रो करते हैं? जानवर जो होते हैं वो खाना खा के बड़े होते हैं, ईट करके बड़े होते हैं. A baby grows into a man. बेबी कहाँ बढ़ता है? आदमी में बढ़ता है. A chick grows into a hen. चिक कहाँ बढ़ता है? मुर्गी के अंदर बढ़ता है. और किचन का कैसे बढ़ता है? कैट के अंदर बढ़ता है. और कैटरपिलर किस में बढ़ता है? बटरफ्लाई में बढ़ता है. So this is the animal cycle and this is all about the chapter 14 nature of animals. Dear student, let's revise the chapter quickly. Very first, animal move. How animals move. So there are some big animals as I am marking it. There are some big animals walk on their feet. कौन से animals अपने feet पे walk करते हैं? Big animals. Birds and some insects fly in the air with their wings. Birds और insects क्या करते हैं? अपने wings, अपने पंखों की help से fly करते हैं, उड़ते हैं. Fish swim in the water with their fins. जो मछलियां होती हैं वो अपने fins की help से तैरती हैं. Snakes and snails crawl. Snakes सांप और snail क्या करते हैं? रेंगते हैं. ठीक है? So this is all about animals move. Let's discuss the next one. Animals feel and react. So, dear student, animals have 2 to 5 sense organs. What are they? Let's discuss. They use their sense organ to sense danger or to search food. Why they use their senses? They use their senses to sense danger or to search food. Animals can openly show their feelings of joy and pain. Their reaction is love, fight or flight. So this is all about animals feel. The next one is animal breathe. Animal कैसे सांस लेते हैं? How animals breathe. Animals breathe in fresh air. Animals breathe in fresh air. Many animals breathe through nose and lungs. As I am highlighting it, nose and lungs. Fish breathe through gills. This is very important that you should know how fish breathe. Fish breathe through gills. How insects breathe? Insects breathe through tiny holes on their body. So again, this is very important. The next one is animals take food and water. How animals take food and water. Animals cannot prepare their own food like plants. They eat plants or other animals. या तो वो plants को खाते हैं या फिर वो किसी और जानवर को खाते हैं. They also need water to stay alive. उन्हें भी क्या होता है बच्चों? Animals को भी जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है. एनिमल्स क्या खाते हैं? या तो वो प्लांट्स खाते हैं या तो वो किसी और एनिमल्स को खाते हैं. सो दिस इज हाउ एनिमल टेक फूड एंड वाटर. As you can see also in picture. Animals reproduce. Animals produce their own kind. Some female animals like cat give birth to babies. Women also give birth to their babies. They feed their babies. Some animals like bird, frog reproduce by laying eggs.
एग से किसके बच्चे होते हैं? चिड़िया के और मेढक के. How animals grow. This is the last one. How animals grow. Animals grow by eating. कैसे grow करते हैं वो? खा के grow करते हैं. A baby grows into a man. A chick grows into a hen. A kitten grows into a cat, and a caterpillar goes into a butterfly. So this is all about the chapter 14. Dear student, we will discuss our 15th chapter in our next class. Thank you.